Hello, my dear students. Today we are going to study class 8 math, chapter 4. Figure it out. Page number 94. Deduction already जितना भी था खत्म हो चुका है. ये figure it out. Very very interesting numbers are there. Now question number 1. What is the question is find all the other angles inside the following figure. डिडक्शन में ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन मैंने डिस्कशन कर चुका है, तो इट इज नॉट सो हार्ड फॉर यू, बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट फॉर यू. इट इज ए रेक्टेंगल, यस और नो? ABCD rectangle. BD and AC are two diagonal. This angle is given 30. Here, this intersecting point is O. Diagonal intersect, not only intersect but also bisect each other. We know it very well. Yes or no? Yes, sir. That means DO equal to BO. Yes or no? Similarly, AO equal to CO. Yes or no? Yes. Is the blackboard is clearly visible? Yes, sir. Otherwise, I will stop this call. Yes, sir. Is it visible well? Then proceed. Similarly, AO equal to CO, BO equal to DO. This angle is 30. What will the? 30. Yes. Angle ABO also 30. Why for? Side. Alternate interior. Good. ABO angle equal to 30 also alternate interior. Alternate interior. Similarly, what will the this angle? If ODC, this angle ODC is 30, then OCD Also 30. also 30. Why for? Sir, it is a isosceles triangle. Because DO equal to CO. It is isosceles triangle. Yes or no? Yes, sir. This angle is 30 also. Because ODC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. Yes or no? If this angle 30, this angle also 30. Yes or no? Yes, sir. This angle 30, this angle 30 means this angle will be AOB will be 180 minus 30 plus 30. Yes or no? Yes, sir. What will the result? 120 degree. 120 degree. AOB equal to 120 degree. AOB equal to DOC also. Why? Vertically opposite. G opposite. That means this angle also 120. Now, what will the value of this angle? BOC. What will the value of BOC? 60 degree. 60 degree. Why for? Linear pair. Linear pair 180 minus this 120. 120. That equal to degree symbol लेना 180 minus 120 that equal to 60. That means this will be 60. This also 60. Vertical opposite. AOB equal to AOD, not AOB. AOD, not AOB. AOD. AOD equal to BOC. Yes or no? Yes, sir. Equal to 60 degree each. B opposite होगा ना? वर्टिकल ऑपोजिट. तो हो गया ये भी 60 हो गया. Yes or no? Now this angle isosceles triangle also AOD. AOD is an isosceles triangle. Yes or no? Isosceles triangle. Similarly, here you can write SC equal to BD. Why for?
Sir, isosceles triangle नो नो डिडक्शन, याद करो डिडक्शन. is equal to BD. Sir, what you get? Diagonals of a rectangle Are equal to each other. equal to each other. That means SC equal to BD. Half of AC also half of BD. That means AO equal to DO, DO also CO. That means it is AOC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. That means what will the value of these are 60. Good. This also 60. This also 60. This also 60. हो गया ना कंप्लीट? निकल गया टोटल एंगल. Yes, sir. Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, angle A. Sir, equal to 90 degree. Sir, हाँ, then sir. एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री हुआ ना नहीं? ऑल एंगल्स आर इक्वल. एंगल ए इक्वल टू 60 प्लस 30. सिमिलरली एंगल डी इक्वल टू 60 प्लस 30. आता है ना टोटल? दिस एंगल आल्सो 90, दिस एंगल आल्सो 90, दिस एंगल आल्सो 90. बिकॉज ए बी सी डी इज एन रेक्टेंगल. हो गया? Here another question for you. PQRS. PQRS. What is PQRS? Rectangle. It is a rectangle. Given this is this intersecting point is O. QS and QS and PR are two diagonals. Are two diagonals. They intersect each other. Not only intersect but also bisect each other at O. They bisect each other At the point of O. at O. Also PR equal to QS. Yes or no? Diagonals of a rectangle are equal. Now QOR is given 110 degree. What will the value of this and this angle? Who can say? OQR is an isosceles triangle. Yes or no? Yes, sir. Isosceles triangle. Sum of a three angles of a triangle is 180. This angle and this angle are equally. Yes or no? What will the value of OQR? OQR का value क्या होगा? How? Same OQR plus ORQ. ये दो एंगल इसका सम क्या होगा? If this is 110, then sum of these two angles will be sum of three angles is 180. One of them is OQR is isosceles triangle. 35. 35 each. Sum is 70. Yes, sir. And these two angles are equal because it is isosceles triangle. That means the value of OQR equal to ORQ equal to 70/2 35. हो गया ना? This angle is 35. This angle also 35. Sir, POQ angle equal to 70 degree. POQ. Sir, POQ. हाँ, this will be 70 degree. 70 degree. Fiber. Sir, linear pair. Plus POQ इक्वल टू 70 डिग्री. लीनियर पेयर से हमको ये मिलेगा. ये दोनों मिलके 180 हो. POQ प्लस QOR इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. ये सब नो लीनियर पेयर. तो हमको ये 70 मिल गया. दैट मींस इट इज V अपॉन इज आल्सो 70 मिल गया. 70 this is 35. That means this will be also 35. This will be also 35. And the POS this angle will be 180 minus 35 plus 35. Yes or no? Yes, sir. POS 110 also. Or other way
QOR इक्वल टू POS, वर्टिकली अपोजिट। तो हो गया, ये भी 110 तुमको मिल गया। नाउ दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस? Sir, 58. ORS equal to O, this point is your O, OSR, yes or no? Yes, sir. Because ORS is an isosceles triangle. Isosceles triangle. What is the value of this angle? Sir, 55. 55. Good. 55 each. Similarly, this will be 55, this will be 55. Total angle find out हो गया ना? Write down. Question number 2. Draw quadrilateral. Draw means it is a construction. Construct करना है. Draw a quadrilateral whose diagonal से भी equal length. Diagonal given here 8 cm each. Rough diagram, ये rough. ये फाइनल कंस्ट्रक्शन नहीं, रफ डायग्राम। डायगोनल 8 cm each. A, B, C, D. SC and BD. Write down. SC and BD are two given diagonals. 8 cm each. Yes or no? Yes, sir. Look at here. Yes, sir. 8 cm each given diagonals. They intersect each other at O. Intersect each other at O. Intersect at the angle. Number 1 given. Intersecting angle will be 30. It is your angle 30. How can you draw this? This 30 means this will be 30 and this will, what will the value of this? 150. ये भी 150 होगा. Yes or no? How can we draw it? What you will take? SC or BD? Let it is BD. It is BD. 8 cm. Take 8 cm BD to find the point of O, intersecting point. It is the midpoint. Yes or no? That means now you will bisect this line BD. Have you any knowledge about bisection और bisector draw करना आता है क्या? No, sir. कैसे करेंगे? हाथ से ज़्यादा एक आर्क लेना है ऊपर और नीचे. सिमिलरली यहाँ से ये इसको यहाँ पर उधर हाथ से ज़्यादा आर्क लेके ऊपर और नीचे ये आर्क लेना है, फिर इधर से ये आर्क को इंटरसेक्ट करना है ऐसे, और ये पॉइंट को जोड़ के एक लाइन ड्रा करना है. ये हो जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट. समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लास 7 से BD is your a diagonal. Then find the midpoint of this line BD. O is your midpoint. Yes or no? The intersecting angle is given there 30 degree. That means इधर तुमको 30 डिग्री ही कंस्ट्रक्ट करना है. कैसे करेंगे? एक आर्क ऐसे लेना है. ये हो गया 60 का हाफ हो गया 30. इधर 30 डिग्री ये कंस्ट्रक्ट हो गया. ये सब नो. Yes, sir. क्या actually is that? वो पॉइंट में तुमको एक एंगल 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. तो ये कंस्ट्रक्शन पहले ये कितना हुआ? ये 60 का हाफ हुआ 30 कंस्ट्रक्ट हो गया. इधर से इसको भी तुम प्रोड्यूस दिस लाइन इधर से. दिस इज योर 4 cm, दिस इज योर 4 cm. Why for? Because the diagonal is 8 cm. हाँ, given diagonal is 8 cm.
This is another diagonal. It is also 8 cm. Measure from O point to 4 cm. Name it A and O से इधर A point name it C. Now तुम्हारा टू इंटरसेक्टिंग डायगोनल तुमको मिल गया. ये 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल तुमको आएगा 150 डिग्री. ये 30 डिग्री. टोटल 180 हो गए लीनियर पे. और ये दो पॉइंट जो मिल गया इसको ज्वाइन कर लो. BC सिमिलरली AD. नाउ ज्वाइन CD. ये हो जाएगा तुम्हारा. ये अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेजरमेंट में हम करते ही नहीं. ये होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रेक्टेंगल. पढ़ना नहीं. सेकंड पॉइंट इज देयर. द एंगल इंटरसेक्टिंग एंगल इज 40 डिग्री. दैट मींस दिस एंगल विल बी 40 राउंडर में कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकेगा. तुमको प्रोटेक्टर चाहिए तो कैसे करेंगे? पहले BD ले लेना है. BD कितना? BD 8 cm. फाइंड द मिड पॉइंट. कैसे मिड पॉइंट करना? मिड पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है? बाइसेक्ट करके राउंडर में हाथ से ज़्यादा लेना है ऊपर और नीचे 2 आर्क लेना है और दूसरा पॉइंट से ये आर्क को इंटरसेक्ट करना है. ऐसे बी से एक आर्क लेना है हाथ से ज़्यादा और ऊपर आता नहीं और नीचे ऊपर और नीचे आर्क लेना है और दूसरी तरफ से ये आर्क को इंटरसेक्ट करना है और ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है. तो ऐसे तुमको मिड पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट से तुमको कितना एंगल 40 डिग्री डिवाइड कीजिए. 40 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. 40 डिग्री लेट दिस एंगल 40 डिग्री. 40 डिग्री हो गया. इधर से ये लाइन को प्रोड्यूस करना है. सिंपली प्रोड्यूस कर देने से भी ये हो जाएगा. ये भी 40 होगा. अब ये मिड पॉइंट इज ओ सी इक्वल टू ओ ए. ये सब नो ओ ए इक्वल टू सर इधर ये BC नहीं BD जो है डायगोनल BC नहीं. ये मिल गया तुमको C. नाउ जॉइन BC CD AD. हो गया रेक्टेंगल. मिल गया तुमको रेक्टेंगल. ये थोड़ा ऐसे ही आएगा. मिलाना नहीं रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह कंप्लीट करेगा. इधर पॉइंट 3 द गिवन एंगल इज 90 डिग्री. दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग एंगल. जब इंटरसेक्टिंग एंगल 90 होगा द रेक्टेंगल विल कन्वर्ट टू if two diagonals of a rectangle bisect each other at 90 degree, that means perpendicular to each other, then this rectangle will be square. रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब if diagonals bisect each other perpendicular to each other, then it will be a square. It will be a square. रंबस हो गया लेकिन ये स्क्वायर ही होगा. लेकिन ये रंबस जैसे देखा जाता है ना. नहीं स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफरेंस क्या है? ऑपोजिट साइड ओनली इक्वल. रेक्टेंगल का स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल. नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3, consider a circle of a center O. This is a circle of center O. Given PL and AM are two perpendicular diameters of a circle.
intersect each other at diameters of a circle intersect each other at center. मिड पॉइंट नहीं, सेंटर. सर्कल का मिड पॉइंट बोला नहीं जाता, सेंटर. और डायमीटर, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल? व्हाट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल? द लाइन व्हिच पास थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर. It is a line. Another draw figure. It is a line, but this is your center. This line is not a diameter. ये भी diameter होगा क्या? No. Also CD is not a diameter. Only EF is a diameter because it is pass through the point. ये CD ये भी ये diameter नहीं होगा, क्योंकि this line not pass through the center. The diameter center pass through the center. Yes or no? Diameter pass through the center. What is the name of AB and CD? What you will say? नहीं नहीं, पास करके pass through the center and two equal parts. The line which divides the circle into two equal parts, or the line which pass through the center or intersect the boundary of the circle. बहुत सारे डेफिनेशन डायमीटर का आ सकता है. पास थ्रू द सेंटर एंड इंटरसेक्ट सर्कमफेरेंस बाउंड्री. बाउंड्री को इंटरसेक्ट करना चाहिए. और ये लाइन ए बी और सी डी हम क्या बोलेंगे? ए बी और सी डी क्या है? कार्ड. कार्ड CHORD. हाँ, but here question is given PL and AM. PL and AM are two perpendicular diameters. Radius half of the diameter or the distance between the center and the circumference. ये center है, ये circumference है. This distance will be radius. Center to इसका boundary जितना distance है वही तो radius है. Distance between the center and its boundary or circumference is called radius. For any line intersect the boundary of the circle or circle का ऊपर the line joining two points. Diameter is the biggest, largest, longest, जो भी बोल सकते. Biggest chord is your diameter और longest. Biggest नहीं बोलते हैं, simply longest. हाँ, look at here. Two intersecting diagonals. Intersecting point is the O. Name them LM. Sorry, AM. Either AM and PL. Intersect each other at O. At a O. Two perpendicular also. This is 90 degree. This is 90 degree. This is 90 degree. This is 90 degree. Good. A B C D. ABCD. AMPL का बारे में पूछा है. AMPL फिगर क्या होगा? What is the figure? AP join the points. AP वो फिगर पूछा है. APML क्या होगा? Square. Definitely it is square. 5 part. This is the isosceles angle. This angle 90 means A 45, AB 45. Similarly, it is also 45. It is 45. 45. 45. So 45, 45 ये 90 हो गया और ये 4 sides will be equal. That means AMPL will be a रंबस भी हो सकता है. लेकिन रंबस इज also a square if all its angles are 90 each. ये स्क्वायर ही होगा. रंबस भी होगा. स्क्वायर इज ए स्पेशल रंबस which all angles are 90 degree and equal.
but all angles 90 degree is not given for the rhombus. rhombus का ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन स्क्वायर का जरूर ये एंगल 90 होगा, और इधर 90 भी हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is there. But we have seen how to get a 90 degree using paper folding. Now suppose we do not have any paper, but two sticks of equal length and a thread. How do we make an exact 90 degree using this? Look at here. I have a thread and a stick. The stick is just your pencil. Is not it? The thread is perpendicular to the stick or pencil. Yes, sir. In this way you will be able to do this. It is just like a physical balance. Yes or no? This thread is just perpendicular. This thread is just perpendicular to the stick. Yes or no? Yes, sir. This pencil now just like a stick, and this is your thread. It is just perpendicular. This stick is a straight line, and this thread is a ray. It makes two equal 90 and 90 each sides, and two angles are Right angle. right angle makes a linear pair. Yes or no? Yes, sir. Question number 4 also finished. Next question, it is last question, question number 5. Question 5, it is the last question for you. We saw that of the opposite. We saw that one of the properties of a rectangle. Rectangle का ये एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? Opposite sides are parallel. Can this be chosen as definition of the rectangle? ये rectangle का definition होगा या नहीं होगा? If is it true? Yes. ये rectangle का definition हो गया. In other words, is every quadrilateral that has opposite sides are parallel and equal is a rectangle? Now, parallel, each opposite sides are parallel. Let these two lines are parallel. Other two parallel lines parallel. Other two lines also parallel. Either A, B, C, D. AB parallel CD. Similarly, SC parallel BD. But it is not a rectangle. However, Because all angles are definitely rectangle का opposite side parallel होता है, equal भी होता है. लेकिन it is not sufficient to say this quadrilateral is a rectangle. Yes or no? Yes, sir. Another property also तुमको चाहिए. What is another property? और एक property क्या है तुमको? 90 degree. हाँ, 90 degree. If this angle and these all four angles are not 90 degree, then we cannot say this a rectangle. But it's parallelogram, एक quadrilateral parallelogram हो सकता है, लेकिन rectangle नहीं होगा. Simply this property is not enough to say a quadrilateral is a rectangle. Yes or no? Opposite sides are parallel and opposite sides are equal. Or parallel and equal is not enough to say a quadrilateral is rectangle. Do you understand? Yes, sir. Only this property is not enough. Also another property will need, must need. What is this property? All four angles are equal. रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना नहीं? पैरेलल होता है ना नहीं? ये पैरेलल भी होगा, ये इसका साथ पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा. पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, लेकिन ये इंटरसेक्ट, ये एंगल्स आर 90 डिग्री. दैट्स व्हाई इट इज ए रेक्टेंगल. बट हियर एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, बट पैरेलल एंड इक्वल. Opposite sides are parallel and equal, but angles are not. That means it is not a Rectangle. yes. In this way,
This is figure out to complete here. Angles in a quadrilateral और एक क्लास में हम पढ़ेंगे. So it is the end of this class. जय जगन्नाथ.